गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रायर सैंक्शन नीडेड टू अंडर पीएमएलए। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा है पहली बार कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है वो प्रायर सैंक्शन लेना होगा अगर उन्हें पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करना है तो पीएमएलए आपको पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए 2003 में बनाया एक लॉ है। अब इसके एक्ट के मेजर प्रोविजंस कहते हैं कि जो है बैंकिंग कंपनीज हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, इंटरमीडियरीज हो, उनको अपनी वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस करनी होगी रिकॉर्ड्स की। अपने सारे क्लाइंट्स की आइडेंटिटी उनको रखनी होगी, मेंटेन करनी होगी, और उनके सारी ट्रांजैक्शंस की भी। तो पीएमएलए जो है वो ईडी को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है इन केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पीएमएलए जो है वो एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाने को भी कहता है, जिससे कि एक्सरसाइज की जा सके जुरिस्डिक्शन पावर और अथॉरिटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, और अगर ज़रूरत पड़े तो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की ऑल्सो। ठीक है, तो ये कहता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जाए ताकि अपील्स हेयर की जा सके। और पीएमएलए जो है वो एक या एक से ज़्यादा कोर्ट्स ऑफ सेशंस भी बनाने को, कोर्ट्स ऑफ सेशंस को स्पेशल कोर्ट बनाने को कहता है। ठीक है, जिनको हम स्पेशल कोर्ट ऑफ अंडर पीएमएलए कहते हैं। पीएमएलए जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ किसी भी कंट्री की कोई भी एग्रीमेंट करे ताकि अगर ज़रूरत है पीएमएलए के प्रोविजंस को इन्फोर्स करने की। ठीक है, तो हुआ क्या कि दिल्ली के जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस के एमपी चिदम्बरम जो थे, उन्होंने रिलीफ मांगा अपने ट्रायल से, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो ईडी है उन्होंने प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट नहीं ली थी हमें प्रोसिक्यूट करने से पहले। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन मैंडेटरी कर दिया प्रोसिक्यूशन के लिए पब्लिक सर्वेंट्स की अंडर पीएमएलए। और ये सेक्शन 197 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी जो है ये लॉ कहता है। ठीक है, तो 197 क्या कहता है कि कोर्ट्स जो है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस तब तक नहीं ले सकते जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने लिया ना हो। ठीक है, तो कोई भी सैंक्शन जो है वो ग्रेव ऑफेंसेस में ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, ट्रैफिकिंग या रेप का केस है, तो उसमें गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक लैंडमार्क केस था देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये प्रोविजन जो है वो करप्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के नाम पे अगर कोई करप्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसमें ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पीएमएलए जो है उसमें सेक्शन 65 जो है अलाइन करता है सीआरपीसी के सेक्शन 197 के तहत, जिसमें कि प्रायर सैंक्शन लेने की बात की जाती है पब्लिक सर्वेंट्स की। चाहे चिदम्बरम का केस हो, चाहे लिकर पॉलिसी का केस हो, दोनों में जो है कहा गया है कि ईडी ने जो है वो वॉलेट किया इस प्रोविजन को या इस प्रेसिडेंट को, और प्रायर सैंक्शन जो है गवर्नमेंट से नहीं लिया। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है पीएमएलए में अगर ट्रायल कोर्ट से कॉग्निजेंस, ट्रायल कोर्ट्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन पीएमएलए में ईडी कर सकती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट्स तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे उस इन्वेस्टिगेशन या चार्जशीट का जब तक पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रायर सैंक्शन ना लिया हो। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स इस आर्गुमेंट को किसी भी स्टेज ऑफ द ट्रायल में जो है रेज कर सकते हैं, चाहे वो पोस्ट कन्विक्शन भी हो। ठीक है, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज जो है वो डिले फेस करेंगी। अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को जो है वो गवर्नमेंट अप्रूवल लेने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से जो है केस बहुत स्लो मूव करता है। ओके, तो एक तरह से ये ऑनेस्ट ऑफिशियल्स को बचाने के लिए अपनी ड्यूटीज से ये प्रोविजन लाया गया था। ठीक है, लेकिन हाई प्रोफाइल फिगर्स जो है इस पर्टिकुलर प्रोविजन का यूज़ करते हुए अपनी ट्रायल प्रोसीडिंग्स को जो है वो बचाने, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपीज आईजीपीज। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस डीजीपीज और आईजीपीज की जो है वो होस्ट की है, अटेंड की है, जो कि इनाग्रेट की थी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो ये एक एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस की गई है इस कॉन्फ्रेंस में, इन्वॉल्विंग पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। होस्ट किया था इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। इसमें कहा गया है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न की जाएं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज द्वारा आपस में एक दूसरे से, और डेलिब्रेशंस ये भी की गई कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर, उसको भी जो है कैसे डील किया जाए। पीएम मोदी ने डिजिटल थ्रेट्स के बारे में बताया है कि कैसे हम एआई का यूज़ करते हुए डीप फेक्स को काउंटर कर सकते हैं। स्पेशल टीम्स बनाने को कहा है ताकि डिजिटल फ्रॉड्स को टैकल किया जा सके। डिसमेंटल करने को कहा है नार्को ट्रैफिकिंग के नेक्सस को, सजेस्ट किया गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए टॉप से बॉटम तक। पुलिस पर्सोनल को जो है बॉर्डर रीजन्स में इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो अपनी नाइट विलेजेस में स्पेंड करें सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, ताकि वो लोकल इश्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सके और बेटर और कम्युनिटी ट्रस्ट बना सके। मोदी जो है उन्होंने कहा है कि
टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वर्कलोड ऑफ द पुलिस भी कम कर सकते हैं। इंडिया ने लगभग 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है साइबर फ्रॉड में जो है वो गंवाए हैं अभी तक सितंबर 2024 तक। इसीलिए जो है इसके ऊपर भी एड्रेस करने को कहा गया है। स्मार्ट पुलिसिंग अप्रोच को फॉलो करने को कहा है, स्ट्रेटेजिक, मेटिकुलस, अडेप्टेबल, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाधवान पोर्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाधवान ग्रीनफील्ड पोर्ट जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है महाराष्ट्र में, वो इंडिया के कंटेनर ट्रैफिक को डबल कर देगा जब वो काम करना शुरू करेगा। वाधवान पोर्ट एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है वाधवान में, महाराष्ट्र में। वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड जो कि JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की एक जॉइंट वेंचर है या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल है, वो इसको बना रहे हैं। 2034 तक जाकर ये फिनिश होगा और वन अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड होगा ये, ठीक है। 9 कंटेनर टर्मिनल्स होंगे इसमें। ये हमारे को जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी हमारे को हेल्प करेगा और INSTC में भी हमारी जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंथ्रैक्स। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई है रिसेंटली बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ड्यू टू कहा जा रहा है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक रेयर बट सीरियस इलनेस है जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड होता है सॉइल में अराउंड द वर्ल्ड और कॉमनली ये लाइव स्टॉक को अफेक्ट करता है। ये बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो ग्राउंड में कई सालों तक रह सकते हैं। और ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, जब कोई भी लाइव स्टॉक या एनिमल जो है वो इस स्पोर्स को या बैक्टीरियल स्पोर्स को ईट या ड्रिंक कर लेते हैं या ब्रीथ कर लेते हैं तो उससे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। जनरली जो है लोग सिक होते हैं एंथ्रैक्स से अगर वो कांटेक्ट में आ जाएं इन्फेक्टेड एनिमल से। एंथ्रैक्स जो है वो पर्सन टू पर्सन ऐसे तो ट्रांसमिट नहीं होता है बट स्किन लीजन से ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, इन्फेक्शन जो है ह्यूमन में वो स्किन की होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की होती है, लंग्स की होती है। तो इसमें जैसे चेस्ट पेन होना, फीवर आ जाना, ब्लिस्टर्स होना, बम्स होना, स्किन अल्सर होना, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो जाना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से ये इफेक्टिवली ट्रीट हो जाता है और अगर कोई बहुत ही हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं तो उनको वैक्सीनेशन भी इसकी दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर स्टॉर्म। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक अनकवर किया है एविडेंस इमेंस सोलर स्टॉर्म का जो कि 664 से 663 BC के टाइम पर अर्थ पर स्ट्रक हुई थी। तो सोलर स्टॉर्म एक सडन एक्सप्लोजन होता है पार्टिकल्स का, एनर्जी का, मैग्नेटिक फील्ड्स का, मटेरियल का, जो कि सोलर सिस्टम में ब्लास्ट होते हैं बाय द सन। सन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्विस्ट होता है जैसे जैसे सन रोटेट होता है उससे ये सोलर स्टॉर्म्स जो है वो शुरू होते हैं इन ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड से और ये स्ट्रेच होते जाते हैं, रिकनेक्ट होके ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट जिसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं वो निकलती है, रेडिएशन स्टॉर्म निकलता है, कोरोनल मास इजेक्शंस निकलते हैं। तो ये ऐसे हमारे अर्थ पे किसी को डायरेक्टली तो नहीं हार्म करते हैं इंडिविजुअल्स को, बट हाँ मेजर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जिसको हम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो पावर आउटेजेस होना, रेडियो ब्लैकआउट्स होना, ब्यूटीफुल ऑरोरास का दिखना, ये सब इफेक्ट्स हमको सोलर स्टॉर्म से देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं RS-28 सारमाट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया जो है वो RS-28 सारमाट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वो डिप्लॉय करने वाला है अपने ओल्ड मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो RS-28 सारमाट है ये लिक्विड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रशिया द्वारा डेवलप किया हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज इसको सैटर्न 2 कहती हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर है। तो ये हैवी ICBM है और ये लगभग 10 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। लगभग 10 हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 16 स्मॉल वंस और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वॉरहेड्स और काउंटर मेजर्स जिसको हम हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल्स कहते हैं उनको भी ये कैरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सिनबैक्स। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट एडिशन है जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स का वो फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में शुरू हो चुका है। ये इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में कंडक्ट की जा रही है एक्सरसाइज। इसका एम है जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, साइबर वॉरफेयर हो, हाइब्रिड वॉरफेयर हो, लॉजिस्टिक्स, कैजुअलिटी मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो, इन सब में जो है इसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, उन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो डेवलपमेंट फंड है वो सेटअप कर दिया है। कैसे? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जो शॉर्टफॉल होती थी उसके में जो फंड्स बचते थे वो इस्तेमाल करते हुए ये फंड बनाया गया है ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है जैसे आपको बताया गया
कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो शॉर्टफॉल है तो उन बैंक्स जो है वो इसमें डाल सकते हैं अपना पैसा, और इससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में क्रिएट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के जो है और या यूटीज़ के जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको सप्लीमेंट किया जाएगा इससे। नेशनल हाउसिंग बैंक इसको मैनेज कर रहा है। कॉर्पस इसका इनिशियल जो है वो 10,000 करोड़ का है, और ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ही लाइंस पर बनाया गया है। तो ये जो UIDF लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, ये बैंक रेट -1.5% रेट पर दिए जाएंगे। जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, लेकिन पहले 2 साल का मॉरेटोरियम है, उसके बाद जाकर 5 जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is prior sanction needed under PMLA. This topic is important for your governance section. So Supreme Court in its ruling on November 6th has for the first time mandated that the Enforcement Directorate need to obtain prior sanction of the government to prosecute public servants on money laundering charges. So we all know that PMLA was enacted in 2003 to combat money laundering in India. Okay, so what are the major provisions of this act? So this act prescribes banking companies, financial institutions, intermediaries for verification and maintenance of records of the identity of all their clients, and also all of the transactions which are involved in them with these clients. So PMLA also empowers the ED to carry out investigations. PMLA also envisages setting up of an adjudicating authority to exercise the jurisdiction, power, and authority so as to, in case it is required, to confiscate the properties. It also envisages setting up of appellate tribunal to hear appeals. The PMLA also envisages designation of one or more courts of sessions as special court or special courts to try these offences which are punishable under the Act. PMLA also allows the central government to enter into agreement with government of any country outside of India in case it is important for enforcing the provisions of the PMLA. So what is the issue here? So Delhi Chief Minister, former Delhi Chief Minister and Congress MP P. Chidambaram have sought relief from their respective trials because they are saying that the ED did not take the prior sanction of the government before prosecuting them. Okay, so this provision is also there not just in PMLA but also in CRPC, the section 197, which says that courts cannot take cognizance of offences committed by a public servant in their official capacity unless prior government approval is taken by the investigative agencies. Okay, no sanction is required for certain grave offences like sexual harassment, trafficking, or rape. And in Devinder Singh versus State of Punjab case also, Supreme Court clarified that this provision does not shield corrupt activities disguised as official duties. Okay, and section 65 of PMLA also aligns with this section 197, which is mandating prior sanction for public servants. So both Chidambaram and Kejriwal are arguing that the investigative agency, in this case the ED, did not take the prior permission or sanction of the government before prosecuting them. So remember that investigations under the PMLA can be done by the ED, but the trial courts have to take the prior sanction of the government. Only after that the cognizance of the charge sheets can be taken by these courts. So public servants use this argument at any stage of trial, even post conviction. Okay, so prosecution agencies, if they keep on taking government approvals, this will basically mean delays and more delays before moving forward with the cases. Okay, so this provision is being otherwise made to protect honest officials from performing their duties. But what is happening is here, like we can see, high profile figures are using or leveraging this provision to contest their trial proceedings. Okay. So the next topic is 59th All India Conference of DGPs and IGPs. This topic is important for your governance section. PM Modi recently attended the 59th All India Conference of DGPs and IGPs at Bhubaneswar, and this 3-day conference was inaugurated by Home Minister Amit Shah. And this conference is basically the culmination of extensive deliberations involving police and intelligence officials from the district, state, and national levels on identified themes. Of course, Intelligence Bureau is hosting this. Best practices from states and union territories were presented at the conference so that states can learn from each other. Deliberations were also held on the emerging security concerns along the border with Bangladesh and Myanmar. So PM Modi emphasized the importance of artificial intelligence to counter deep fakes, and he said that special teams should be made to create
special teams should be created to tackle these digital frauds. And he also highlighted the need to dismantle the narco trafficking nexus, suggesting strict action from top to bottom. Okay, police personnel in border regions were also instructed to spend nights in villages with senior officials to understand local issues better and build community trust. He also called for the use of technology to reduce the workload of the police. We also know that crime data electronically need to be updated and improve the measures, and it is important to improve the measures to as to counter cyber related issues, because India has lost approximately 11,000 crore plus to cyber frauds until September 2024. So he has suggested smart policing approach, which means strategic, meticulous, adaptable, reliable, and transparent. So the next topic is Vadhavan Port. This topic is important for your economy section. So Vadhavan Greenfield Port, which is under construction near Dahanu in Maharashtra, will double India's container trade from current levels upon completion. So this is a all-weather greenfield deep draft major port in Vadhavan, that is in Palghar district of Maharashtra. It will be implemented by Vadhavan Port Project Limited, which is the special purpose vehicle formed by the Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board. And this port is scheduled to be finished by 2034, and it will be among the top 10 ports in the world. Okay, this will comprise of 9 container terminals, and this will aid India's EXIM trade through the IMEEC and the INSTC as well. Okay, so the next topic is anthrax. This topic is important for your environment section. So a female elephant died due to suspected anthrax at the Bandipur Tiger Reserve recently. So anthrax is a rare but serious illness which is caused by a spore forming bacterium, which is found naturally in the soil, and it commonly affects livestock. This bacteria produces spores which can live in the ground for years. So how does it get transmitted? So livestock and wild animals can become infected if they breathe in, eat or drink bacterial spores in contaminated soils, plants or water. People usually get sick from anthrax if they come in contact with infected animals or contaminated animal products. People to people contact is not very usual, but if it can be done, it can happen with the skin lesions. Okay, infections in human most often involves the skin, gastrointestinal tract or lungs. So symptoms include chest pain, trouble or breathing, fever, headache, itchy blisters or bumps, skin ulcers, swollen lymph nodes. Okay, so antibiotic treatment is very effective in this, and vaccination against anthrax is only recommended for those who are at high risk. So the next topic is solar storm. This topic is important for your science and tech section. So scientists have uncovered evidence of an immense solar storm which struck Earth around 664 to 663 BC. So this solar storm is a sudden explosion of particles, energy, magnetic fields and material which is blasted into the solar system by the sun. So what happens is that sun's magnetic fields get twisted up as the sun rotates, and then this solar storms typically begin when these twisted magnetic fields on the sun get contorted or stretched, and then they reconnect, releasing large amounts of energy into the solar system. So a bright flash of light, which is called a solar flare, is generated. A radiation storm is also launched or released at high speeds. So there is also an enormous cloud or solar material which is also called coronal mass ejections. So it can create major disturbance in Earth's magnetic field. That's why which is called the geomagnetic storm, and which can produce effects like radio blackouts, power outages and beautiful auroras. They do not cause any direct harm to anyone on Earth. Okay. So the next topic is RS-28 Sarmat. This topic is important for your security section. So Russia is set to deploy the RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile, which is also known as Satan II, to replace the older missiles. So it is a liquid-fueled intercontinental ballistic missile developed by Russia, and the Western countries call it Satan II. Okay, so it is a 3-stage liquid-fueled missile with a range of 18,000 kilometers. So it is designated as a very heavy ICBM, and it can carry about 10-ton payload. It can also load up to 10 heavy nuclear warheads, 16 smaller ones, a combination of warheads and countermeasures, and even hypersonic boost glide vehicles. Okay. So the next topic is exercise Sinbex. This topic is important for your security section. So the first edition of joint tabletop exercise Sinbex commenced at the Foreign Training Node Pune, which is conducted between Indian Army and Cambodian Army. So this exercise is aimed to
which it is aimed for counter-terrorism operations, and this exercise will also involve discussions regarding cyber warfare, hybrid warfare, logistics and casualty management, even humanitarian and disaster relief operations. Okay. So the next topic is Urban Infrastructure Development Fund. This topic is important for your economy and your governance section. So recently, Minister of State in the Ministry of Housing and Urban Affairs has informed the Lok Sabha about the government, about how the government has set up the Urban Infrastructure Development Fund by using the priority sector lending shortfall so as to create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. This Urban Infrastructure Development Fund was established through the use of priority sector lending shortfall, and it will be used by public agencies to create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. It will also supplement the efforts of the state governments and UTs for urban infrastructure development works. Okay, so this fund is being managed by the National Housing Bank, and initial corpus of this fund is 10,000 crore rupees, and it has been established on the lines of Rural Infrastructure Development Fund. Okay, so the interest rate on this UIDF loans has been kept at the bank rate minus 1.5%, and the loan or the principal amount will be repayable in 5 equal installments, but there will be a moratorium of 2 years initially. Okay, so only after that the 5 equal installments have to be paid. That is, the loan duration will be about 7 years from the date of draw. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.